आपके लिए इतनी मेहनत करके इतना सबर रही हूँ। तो नमस्कार दगड़ियों, मैं आपका दोस्त साहिल आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके घर में भी सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है, फ़िलहाल तो आपको मौसम के हालचाल बता लेता हूं पहले। तो अभी बारिश शुरू हो गई है और शादी में जाने का प्लान था हमारा। तो शादी में जा रहे थे हम, मैं और एक और जा रहा था साथ में। तो हम जा रहे थे अरविंद की दीदी की शादी में, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो अभी शादी का तो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश लगने लगी है। तो अभी ये देखो बारिश आ रही है। तो ये देखो दोस्तों, वहाँ पे तो बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़, और अभी यहाँ पे ना बूंदाबांदी हो रही है इस साइड, हमारे साइड। और बाकी तो बारिश के बाद का जो व्यू, हल्की फुल्की बारिश होती है ना, तो उसके बाद व्यू कुछ अलग ही होता है, घर का देखने लायक नज़ारा होता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, और आज ना हमारा जो एक गढ़वाली गाना जिस पे डांस प्रस्तुत होने वाला है, ठंडी ठंडी बरखा, ठंडी ठंडी बरखा। बारिश में भीगने का कुछ अलग ही आनंद है। लेकिन तो दोस्तों, अभी बारिश शुरू हो चुकी है और अभी कम थी लेकिन और ज़्यादा लगने लगी है। और ना क्या हुआ कि मैं और मम्मी बैठ रखे थे, तो मम्मी ने कहा कि आज वो एक डांस दिखाएंगे आपको, और आजकल गढ़वाली गाना चल रहा है बलमा। तो मम्मी ने कहा कि मैं करूँगी बलमा वाले गाने में डांस करूँगी। तो अभी जो हमारे एक्टर हैं, तो आज हम एक्टर ही बोलेंगे, तो एक्टर जी का मेकअप हो रहा है, तो आपको मिलाते हैं। तो ये हमारे आज के एक्टर्स। तो अपना परिचय देना चाहोगे? आप पहचान भी नहीं पा रहे होंगे मम्मी को। अभी ऐसे लग रहा है कि कोई 17-18 साल की कोई लड़की है, वो यहाँ पे मेकअप कर रही है। पहले ही फेस इतना गोरा हो गया मम्मी का। तो अभी तो मैं आपके सामने छोटा सा डांस करूंगी। उम्मीद है उसको लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और जैसा भी लगे बस दिल से उसे देखे। आज मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके इतना सबर रही हूँ, इतना अपना टाइम निकाल रही हूँ, तो इसलिए लाइक तो बनते हैं, और उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी खुशी मिले, और मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसे नई नई वीडियो लाती रहूँ। 500 लाइक है मैं, और अगर ये वीडियो पे 500 लाइक आ गए तो बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ होने वाला है, और उसके बाद ना मम्मी सरप्राइज़ के साथ डांस करेगी। तो ये सरप्राइज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज़ मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा क्या सरप्राइज़ है। तो अगर कर दिए 500 लाइक डन, तो उसके बाद सरप्राइज़ बताऊंगा आपको। मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है और नाचने का तो शौक है ही। जो मुझे जानते होंगे, मेरी सहेलियाँ होंगी, देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि मैं कितना डांस करती थी पहले। कोटा का बटन, कोटा का बटन, पिया बोले बलमा कोटा को बटन, घम एगे भैर, घम एगे भैर तेरी चारटन, पिया बोले बलमा तेरी चारटन। तो दोस्तों, अभी एक बार फिर से सुनहरी धूप खिल चुकी है, और एक बार अंधेरा हो गया था, एक बार फिर से सुबह हो चुकी है। ऐसे में समझना है कि सच में सुबह हो गई। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इतना थोड़े थोड़े तो चलता है यार मजाक मस्ती आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर अलग पहना है, नीचे अलग पहना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये नीचे का कोमल का है और ये ऊपर का मेरा ब्लाउज है। इसके साथ का जो है वो मेरे पे फिट नहीं आ रहा है, वो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, इसलिए मुझे ब्लाउज पहनना पड़ा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि क्या आपको लगता है ये मेरी मम्मी है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरी मम्मी है। पता नहीं कौन आ गया हमारे घर में। बताओ जल्दी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ ड्रिंकर। इतना टाइम हो गया दोस्तों, अभी तक हमारी जो मम्मी है वो रेडी नहीं हो पाई, और अब तो मुझे नींद भी आ रही है। लेकिन हमारी जो एक्टर मम्मी है वो Hey kid, don't ever let them get inside your head.
They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you